A very good morning to you all students. Today we will be doing our first topic of English literature. Till now we were doing the grammar part. Today we will do a poem, alright? Okay. The poem is Joy the Emoji by Ken Nesbitt. First we understand what is emoji. Emoji, a small digital image used to express an idea or emotion. इमोजी एक छोटी इमेज होती है जो आपका आइडिया और आपके एक्सप्रेशन को शो करने के लिए भेजे जाते हैं. सो एज यू कैन सी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लवली पोएम. होप यू विल enjoy reading and understanding it. So here are a lot of emojis used in the poem and they all tell a different story. So let's begin the poem. I am Joy the emoji. So in the first line of the poem, the emoji introduce itself and tell his name. What is the name? Joy. Okay, so Joy is telling that when he is glad, glad means happy, his face becomes like this. This means it's happy emoji. ये खुश होने वाला emoji है. Next line, I'm when I am angry. This means Joy gets angry. His face becomes this. So this is angry emoji. जब जॉय गुस्सा हो जाता है तो उसका फेस कैसे हो जाता है? लाइक दिस. नेक्स्ट लाइन इज आई एम व्हेन आई एम सैड. नाउ स्टूडेंट, व्हाट डज दिस मीन? When Joy the emoji gets sad, he cries, become this, the sad emoji. जब Joy sad होता है, दुखी होता है तो उसका फेस कैसा जाता है? Like this, crying with tears. Okay. Now moving to next stanza. Okay. In the first two lines, Joy says, whenever I'm silly, my face goes like this. So, whenever Joy does something silly or stupid, he makes face like this. जब भी Joy कोई शैतानी करता है, कोई stupid things करता है, तो उसका face कैसे हो जाता है? Like this. So, this is silly emoji. Okay. Next line is, if I like you. That means Joy winks when he likes you. So this will be the wink emoji or like emoji. Understand? Joy जब like करता है तो Joy कैसा emoji करता है? और wink emoji में अपनी एक आइज को shut कर लेता है. Clear? और blow you up. What is the meaning of blow you up? Let's see. Make a gesture as though sending a kiss through the air. So, if the Joy likes you, may he also make a gesture as though sending a kiss through the air. एक और इमोजी है लाइकनेस का. जब जॉय लाइक करता है तो एक और इमोजी सेंड करता है लाइक कि अब किस करता है एयर में. क्लियर नाउ? एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? ओके. नाउ थर्ड स्टैंजा. So the first line is when I am tired. So Joy का इमोजी जब टायर्ड होता है तो ये शो करता है कि उसको नींद आई है. क्लियर? सो दिस इज स्लीपी इमोजी. नेक्स्ट, when I am afraid. So now what does Joy do when he's afraid? He cries. Yes,
Joy cries when he is afraid. So this is crying emoji. जब जॉय डर जाता है तो वो कैसा इमोजी सेंड करता है? क्राइंग इमोजी. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट लाइन, आई हैव द मोस्ट फ्लेक्सिबल ever made. First we know what is the flexible. Flexible, here able to show many emotions. आप अपने बहुत सारे इमोशन शो करने में कैपेबल होते हैं. इट्स कॉल्ड फ्लेक्सिबल. सो here Joy is saying that he has the most flexible face ever made. Student, is he correct? Can you make all the faces that Joy the emoji can well? क्या आप सब जॉय द इमोजीज की तरह फेसेस कर सकते हैं अगर फ्लेक्सिबल है तो? लेट्स ट्राई वंस. ओके, मूविंग टू द लास्ट स्टैंजा. द फर्स्ट सेंटेंस इज, आई होप दैट यू मी and don't think I am rude. Now, after all this, Joy is hoping that you like him. So you like Joy? पूरी पोएम रीड करने के बाद आप जॉय द इमोजीज को लाइक करते हो? डोंट यू थिंक रूड? ये तो नहीं समझते कि वो रूड है. ओके, नाउ सो यू लाइक जॉय एंड ही इज नॉट रूड. What he finally says is again that he is Joy, the emoji, and he is one dude. This means he is cool dude. Dude means stylish and confident. That means he is cool, stylish and confident person. So, finally, this is the cool emoji. So, with this, the poem has ended. Interesting poem, right? I hope you all enjoyed reading it. It was a fun poem and easy as well. We all know Joy the emoji, right? अब हम सब जानते हैं Joy the emojis को, right? Thank you for watching me.